Good morning students. Okay, is everything clear? Audio video clear है बच्चा? Just give me a green signal and then I proceed. क्या descriptive writing session 1 आपको clear है? Descriptive writing क्यों, क्या होता है, कैसे करना है? The what, why and hows of descriptive writing. Thank you so much students. Okay, let's get ready with descriptive writing session 2. आज का descriptive writing session 2, कल डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेशन 1 हुआ था जिसमें मैंने कवर किया था एसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। मतलब अगर आप एसे और लेटर राइटिंग से क्लियर हो, इट मींस यू हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 70% ऑफ द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेशन। 30% में आ जाएंगे आपका ट्रांसलेशन, आपका रिपोर्ट राइटिंग, लीफलेट राइटिंग, precise writing and all this. Clear? So let's get ready for today's session which is all about descriptive writing part 2. कल के सेशन का मेन gist, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, the more you read the better you write. Understood? जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा लिखोगे। सेम, अगर टैंक में 5 लीटर पानी है तो मैं टैंक से 8 लीटर बाहर नहीं निकाल सकती। You need to have a vivacious, versatile reading if you want to become a good writer. Clear? Chalo, let's get ready with today's session, that is descriptive writing session 2. Now, what is precise writing? Precise writing. Precise इसका single है, precise इसका plural है. Precise writing is nothing but summarizing. Summary और precise writing almost same है. Almost same है, पूरे same नहीं है. समरी राइटिंग और प्रिसीज राइटिंग में कुछ डिफरेंसेस हैं। समरी राइटिंग में पैसेज की सिर्फ हम निचोड़ निकालते हैं। ओके, दैट में इंक्लूड द जनरल आइडिया, द कंक्लूजन, द इन्फरेंस ऑफ द पैसेज। प्रिसीज राइटिंग इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द पैसेज। मतलब पैसेज इतना बड़ा है तो उसको छोटे फॉर्म में जो आप लाते हैं, दैट इज प्रिसीज। प्रिसीज शुड इंक्लूड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम ईच पैराग्राफ। Again, I repeat. Precise should include every important point from each paragraph. That is what is the miniature part of the passage. Understood? Precise writing, summary writing से थोड़ा ज्यादा होता है, one step आगे होता है। Summary में क्या होता है कि सिर्फ आप बोल देते हैं this passage is all about the economics, the Indian economics. ठीक है? But precise writing में पहले पैराग्राफ का important point, second पैरा का important point, framing of the ideas, sequencing of the parts should be the same. किसमें? पैसेज में और प्रिसी में। समरी में ऐसा नहीं है। So precise writing will be a bit more than summary writing. इतना फर्क याद रखो। Precise writing will be more than summary writing. Summary writing में आप क्या करते हो? पूरा निचोड़ निकाल के दे देते हो। For example, the passage is all about 1, 2, 3, 4, that's it. But precise writing में sequence of the ideas should also be the same. Okay, precise writing is summarizing a comprehension in limited words, covering all the important aspects and details given in the passage. And it has to be sequential. It has to be sequential. Next, begin with the basic idea of the passage and then go for the part, the way the things are mentioned in the passage. Okay? आपको precise writing एक general idea दे देता है कि आप क्या पढ़ने वाले हो। इसको abstract भी बोलेंगे, इसको summary भी बोलेंगे। Okay, you have to make a note of all the important points and then you have to include them in your précis. Follow the main idea of the passage. Include all the important keywords and terms. This is very important कि précis writing में ना बहुत सारे keywords आने चाहिए, important words आने चाहिए. The length of the précis must be shorter than the passage. Passage से छोटा होना चाहिए. Generally précis writing को माना जाता है 80 to 100 words में. आपको दिए जाते हैं 350, 400, 500 वर्ड्स का पैसेज, जिसमें से 80 से 100 वर्ड्स का आपको प्रिसी लिखना होता है। 10 मार्क के लिए आता है, 10 मिनट आपको मिलते हैं। नेक्स्ट, डू नॉट गिव योर ओपिनियन। आपको अपना खुद का मन का विचार नहीं डालना है प्रिसी राइटिंग में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यू आर नॉट अलाउड टू एड, यू आर नॉट अलाउड टू डिलीट। ओके, नेक्स्ट, यू शुड नॉट यूज एब्रिविएशंस। ओके, फुल फॉर्म, फॉर्मल लैंग्वेज में कभी भी हम लोग जनरली एब्रिविएशंस का यूज नहीं करते हैं। डू नॉट एंटर स्टेटमेंट्स इन द क्वेश्चन फॉर्मेट। क्वेश्चन फॉर्मेट में स्टेटमेंट्स आप नहीं डालेंगे प्रिसी राइटिंग में।
डोंट फोकस ऑन एनी वन सिंगल पॉइंट फॉर टू लॉन्ग पीरियड. एक ही पॉइंट को बार बार घुमा फिरा के अगर आप बोल रहे हो तो दैट वोंट बी कंसिडर्ड एज अ गुड प्रेसी. क्लियर? अच्छे प्रेसी राइटिंग के कुछ पॉइंट्स है. सबसे पहला, प्रेसी राइटिंग शुड जनरली बिगिन विद द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. It should have the same sequence of the important points as the passage. It should have all the important keywords of the passage. Precis writing should be shorter than the passage. बहुत सारे बच्चे उसको लंबा कर देते हैं पैसेज से. आपको शॉर्टकट्स, एब्रिविएशन सारे अवॉइड करने हैं. क्वेश्चनिंग फॉर्मेट नहीं चलता है प्रेसी राइटिंग में. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू आर नॉट अलाउड टू एड योर ओन ओपिनियन. यू आर नॉट अलाउड टू डिलीट सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज व्हाइल यू आर राइटिंग अ प्रेसी. क्लियर? प्रेसी राइटिंग आता है कहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हो आप इसको? नाबार्ड में एक्सपेक्ट करिए, आप इसको इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम में एक्सपेक्ट करिए, आप इसको टिस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट प्रेसी राइटिंग एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में अभी तक तो नहीं पूछा है. द लास्ट एग्जाम तक नहीं पूछा है और चांसेस भी कम है. वो ऐसे और लेटर पे भी फोकस करेगा, बट यू नेवर नो. यू नेवर नो. एग्जाम्स हैव ऑलवेज गॉट अ सरप्राइज विद देम, राइट? सो यू नेवर नो. बट प्रेसी राइटिंग ऐसे और लेटर के बाद सबसे नेक्स्ट मेजर आस्क्ड क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव का. सबसे पहला ऐसे, फॉलोड बाय लेटर, फॉलोड बाय प्रेसी. नाबार्ड में आएगा, आईबी में आएगा. ठीक है? नेक्स्ट, नसी, आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है फास्ट और पढ़ के इसका प्रेसी लिखने की कोशिश करना है. कम ऑन, बी क्विक. आई गिव यू 2 minutes फॉर दिस. वैभव सर, इज इट विजिबल? बच्चों आपको दिख रहा है? विजिबिलिटी है? विजिबल है ये? कैन यू रीड? इज इट विजिबल? कैन यू रीड स्टूडेंट्स? लेट मी नो. Yes or no? Can you read this? Yes. Okay. Thank you so much. It is visible. Now I give you time for 3 minutes का टाइम लगा देते हैं. वैभव सर 3 minutes कर दीजिए. Yes. थोड़ा सा इनको देखने में दिक्कत आएगी. फिर हम इसको 3 minutes का टाइमर है और आपको इसका प्रेसी लिखना है. जल्दी 3 minutes. Get ready with a pen and paper in your hand and start writing. Start writing. Come on, be quick. पैसेज पढ़िए और इसका प्रेसी लिखिए. What is the passage all about? Start writing. 3 minutes का टाइमर.
So Harshal is the first one to answer this. Okay, let's see. Now this is how the precise should be, how the ideal precise should be. See, earthquake is the mankind's deadliest enemy. Earthquake strikes all without a distinction of nationality or political affiliation. The power of a quake is greater than that of any man-made weapon of destruction. An earthquake strikes mankind without a warning. A modern city, when struck, is reduced to a nibble. A quake strikes plains, seas, and mountains, causing all around destruction. The quake struck Lisbon in 1755, killing 450. Peru in 1970, killing 50,000. Alaska in 1968, moving it 80 feet into the Pacific Ocean. Scientists are trying to find out means to combat earthquakes, to predict the origin, and so that precaution can be taken to save man and property from destruction. तो ये रहेगा precise. This should be the precise. Clear? So I think Harshal has tried it really well. Keep it up, Harshal. See how important points should be mentioned. चले आगे. Next. Now it comes to comprehension और translation. IB में, IB का अगर आपने नोटिफिकेशन अच्छे से देखा है तो बच्चा IB में ना डिस्क्रिप्टिव जो पार्ट 2 है एग्जाम का उसमें क्लियरली मेंशन किया है ऐसे, लेटर और कॉम्प्रीहेंशन. तो कॉम्प्रीहेंशन का नाम तो डाला है बट IB के एग्जाम में उन्होंने क्या किया था लास्ट ईयर, एक पैसेज दिया था. पैसेज को आपको हिंदी या मराठी में ट्रांसलेट करना था, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू ट्रांसलेशन, in fact I should tell you, जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट RBI के लिए होता है उसमें भी they give you few sentences in English which you have to translate in Marathi, in the mother tongue. तो now students, if you take a look at this, जब आप ट्रांसलेशन की बात करते हो तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है. ट्रांसलेट करते समय कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना है, जैसे कि फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज मीनिंग बदलना नहीं चाहिए. When you go for translation, focus more that the meaning should not change. Try to convey the exact meaning as mentioned in the English language in any other language. Meaning should be the same. First. Second, tone of the author should be the same. Tone of the author, मतलब author passage एक positivity में लिख रहा है, negativity में लिख रहा है, criticize कर रहा है, okay, confess कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, तो टोन ऑफ द ऑथर भी वही आना चाहिए जो पैसेज में दी है. सेकेंड. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेंस. जितना हो सकता है पैसेज का टेंस और आपके ट्रांसलेशन का टेंस आप सेम रखने की कोशिश करें, यानी ग्रामर. क्लियर? सो व्हेन यू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी और टू हिंदी लैंग्वेज, 3 पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर. फर्स्ट, मीनिंग नाही चेंज झालं पाहिजे. सेकेंड, very very important is what, the tone of the author should be same. मतलब यहां पे ऑथर अगर फार्मर बिल को क्रिटिसाइज कर रहा है और आपके लिखने की टोन में फार्मर बिल को सपोर्ट है तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज मेक अ पॉइंट दैट द टेंस शुड ऑल्सो बी सेम. अंडरस्टूड? चलो ये 3 पॉइंट्स को आपके ध्यान में रखते हुए इस पैसेज का आपको ट्रांसलेशन करके दिखाना है. स्पेसिफिकली मैंने साइंटिफिक ओरिजिन का पैसेज लिया है जिसमें वर्ड्स हैं जैसे जाइलिन है, एथिल बेंजीन है. अब ये जो टेक्निकल वर्ड्स हैं इनका आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है बिकॉज दैट इज द साइंटिफिक वर्ड. यू डोंट नीड टू फाइंड अ वर्ड फॉर इथाइल बेंजीन. जैसा है वैसा भी लिखा तो चलेगा. क्लियर? द मीनिंग शुड बी द सेम. चलो लेट्स गेट रेडी विद दिस. बी क्विक. वैभव सर इनको लगा दीजिए. ये विजिबल है क्या? पहले अगर पूरा नहीं भी किया तो फर्स्ट पैराग्राफ का करिए. 3 मिनट लगा दीजिए. ओनली फर्स्ट पैराग्राफ. ओनली फर्स्ट पैराग्राफ. ओनली फर्स्ट पैराग्राफ. इफ यू डू दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर मी.
Only at least for the first paragraph I want you to translate it. How well have you comprehended the passage? कितना अच्छे से आपको समझा, कितना अच्छे से ये पैसेज आपको समझा. कितना अच्छे से ये पैसेज आपको समझा. यू हैव टू ट्रांसलेट इन योर ओन लैंग्वेज. करेक्ट रोहिणी. जब आप ट्रांसलेशन करते हो तो आपको एक करना पड़ेगा, यस यू हैव टू राइट इन मराठी. रोहिणी, जब आप ट्रांसलेशन की बात करते हो बच्चा, तो आपको पहले पूरा रीड करना है एंड देन यू हैव टू ट्रांसलेट. अगर तुम वर्ड या सेंटेंस टू सेंटेंस ट्रांसलेट करोगे तो तुमको ऑथर की टोन ही नहीं समझेगी, राइट? तुमको ऑथर का टोन समझ के ट्रांसलेट करना है. सो फर्स्ट जब आप ट्रांसलेशन करते हो तो रीड द होल पैसेज, देन लाइन बाय लाइन यू कैन ट्रांसलेट इफ यू वांट, बिकॉज दैट इज द ओनली वे यू कैन कम अक्रॉस द टोन ऑफ द ऑथर. ओके. The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization is Australia's main scientific body. They conducted a research on the toxicity of the interior of new cars over a period of 2 years. Commonwealth, या जिसको आप कहेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑस्ट्रेलिया की मेन साइंटिफिक बॉडी कहलाती है. नेक्स्ट, उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट किया था ऑन टॉक्सिसिटी ऑफ द इंटीरियर ऑफ न्यू कार्स ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years. Steve Brown, the head एयर क्वालिटी कंट्रोल रिसर्च यूनिट, ड्रॉज अ पैरेलल बिटवीन द होम एंड द कार. तो अगर आप पैसेज की टोन देखोगे तो टोन ऑफ द पैसेज इज प्रीटी इंफॉर्मेटिव. नहीं, बैंकिंग को नहीं है योगिता, दिस इज नॉट देयर. बैंकिंग में नहीं है, ये आईबी में है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये क्वेश्चन है. ये बैंकिंग में नहीं आता और आएगा भी नहीं. ये इंश्योरेंस में नहीं आता और आएगा भी नहीं. ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का क्वेश्चन है. ठीक है. मैं सिर्फ ये बताना चाह रही कि टोन ऑफ द ऑथर फॉर दिस पैसेज इज इंफॉर्मेटिव. तो जब आप हिंदी में या मराठी में लिखो तभी भी इसकी टोन क्या होनी चाहिए बच्चा? इंफॉर्मेटिव. नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? रिपोर्ट राइटिंग इज बेसिकली अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जनरली जो आप न्यूज़पेपर या मैगजीन में किसी ऐसे इवेंट की लिखते हो जो आपने अटेंड किया है. रिपोर्ट राइटिंग 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. बट कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपोर्ट राइटिंग आता है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्लियर, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स में. रिपोर्ट राइटिंग इज बेसिकली गिविंग अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट. हम लोग एक विजिट करने गए थे एक मेमोरियल हाउस, एक म्यूजियम, एक ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में आपको रिपोर्ट देना है. मतलब वो ब्लड डोनेशन, बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग न्यूज़पेपर या मैगजीन्स के लिए होता है, राइट? रिपब्लिक डे रिपोर्ट राइटिंग, यस हर्षल, ये स्कूल का है. सो रिपोर्ट राइटिंग इज बेसिकली एन अकाउंट ऑफ समथिंग विच हैज टेकन प्लेस इन द पास्ट एंड यू वांट टू नरेट इट टू द रीडर्स. आपके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट हुआ इसकी रिपोर्ट लिखिए. यू मस्ट हैव डन दिस. विजिट टू इंडस्ट्री, विजिट टू अ म्यूजियम. ओके. रिपोर्ट राइटिंग में कैसा फॉर्मेट होता है और उसके नंबरिंग कैसी दी जाती है. इफ यू टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट, इसमें सबसे पहले हेडिंग होनी चाहिए और रिपोर्टर्स नेम होना चाहिए, जिसके लिए आपको 1 मार्क है. उसका जो कंटेंट है उसके लिए आपको 4 मार्क है. ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, एप्रोप्रिएट वर्ड्स और स्पेलिंग्स 2.5 मार्क दिए जाते हैं. कोहेरेंस एंड रेलेवेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल के लिए 2.5 मार्क दिए जाते हैं. सो रिपोर्ट राइटिंग में हेडिंग और रिपोर्टर्स के नेम को 1 मार्क, देन फॉलोड बाय द कंटेंट. Clear? Now if you take a look at this, एक होता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट और एक होता है मैगजीन रिपोर्ट. न्यूज़पेपर रिपोर्ट में प्लेस एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग होता है और मैगजीन के रिपोर्ट का भी फॉर्मेट सेम है, सिर्फ इसमें प्लेस एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग नहीं होता है. न्यूज़पेपर रिपोर्ट में प्लेस एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग होता है, मैगजीन के रिपोर्ट में इतना पार्ट नहीं होता है. एंड दिस इज हाउ द फॉर्मेट इज टू बी डन फॉर अ रिपोर्ट. If you take a look at the format, there you have to have a headline, a visit to the zoo, a visit to the museum, okay? By line, then the name of the person who's mentioning the report, place and date, कि आप कहाँ से रिपोर्ट करें, औरंगाबाद and the date. You must have seen newspaper की रिपोर्ट्स आते हैं ना. न्यूज़पेपर का अगर आप देखोगे कोई इंसिडेंट है, इंसिडेंट के नीचे वो रिपोर्ट देने वाले का नाम होता है, उस रिपोर्टर का, उस जर्नलिस्ट का, followed by the date. Clear? You must have seen that in newspapers. उसके बाद क्या होता है? ओपनिंग पैराग्राफ.
ओपनिंग पैराग्राफ में बेसिकली हेडलाइन को ही थोड़ा सा इलैबोरेट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. Okay, 20 robbers were caught by police at Chikalthana. Just giving an example. 20 robbers caught by police at Chikalthana. इसकी आपने हेडिंग दी. हेडिंग के बाद क्या आएगा? सुधांशु शर्मा, रिपोर्टर का नाम. Followed by Aurangabad, 12th January, whatever, 12th January 2021, date. Followed by 20 robbers were caught hold by the police during the wee hours of the day, night, whatever, at Chikalthana. ये आप elaborate करते हो थोड़ा. Followed by the account of the event in detail. किसके घर में पकड़ा, कहां पकड़ा, क्यों पकड़ा, all that. And finally the concluding para. Concluding para का क्या जाएगा कि robbers को hand over कर दिया, वो किसी जेल में है, and all this. So that will be the concluding paragraph. Okay? Next. See. Now this is a question for a report writing. See, this is a question for a report. You are an active member of the Animal Lovers Club, which works for the welfare of animals by preventing cruelty to them. Recently, you visited Mahatma Gandhi Animal Care Home. You were pleasantly surprised to see the good treatment given to the animals. Write a report in 150 to 200 words on your visit. Okay? This is basically report writing का question. हर्षल मैम ये नहीं समझा, प्लीज एक बार फिर से रिपीट करना. व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट हर्षल? दिस इज अ क्वेश्चन और फिर ये पॉइंट्स दिए जाते हैं कि वहां पे रिपोर्ट में आपको क्या मेंशन करना है. दे आल्सो गिव यू पॉइंट्स दैट यू हैव नीड टू मेंशन इन द रिपोर्ट. यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स: इंजर्ड डॉग्स एंड कैट्स, अबेंडन्ड पेट्स, वेरी ओल्ड एनिमल्स दिखे, ऑल वेरी वेल केयर्ड फॉर, वेल इक्विप्ड मेडिकल रूम है, वेटरनरी सर्जन है, ग्रीन सराउंडिंग्स है. ये पॉइंट्स को लेकर आपको आपकी रिपोर्ट बनानी है. ठीक है? If you take a look, this is the sample. See how the report. A visit to Mahatma Gandhi Animal Care Home. Heading. यहां पे नाम, कोई भी नाम आपका जो नाम है आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये मैगजीन की रिपोर्ट है इसीलिए इसमें प्लेस और डेट नहीं आया. Animal Lovers Club was recently invited by the Mahatma Gandhi Animal Care Home for a visit where an opportunity to oversee the working of the organization was given. ठीक है? Next, it is home to abandoned pets and all that. So this is how a report has to proceed. ये उसी का एग्जाम्पल है हर्षल कि स्टार्ट कैसे करना है, पॉइंट्स कैसे लिखना है. मैंने उसी का सैंपल लिया है तो आपको समझ में आएगा कि सपोज राइट अ रिपोर्ट दैट यू विजिटेड अ एनिमल केयर होम और उसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखना है. ठीक है? एनिमल लवर्स जनरली रिपोर्ट राइटिंग नॉट मोर देन 150 वर्ड्स होता है रोहिणी, नॉट मोर देन 150 200 वर्ड्स में आपको इसको कवर करना है. ठीक है? ये उसका सैंपल है हर्षल. आपने विजिट किया, आपने हेडिंग डाली, आपने नाम डाला क्योंकि ये मैगजीन रिपोर्ट है इससे डेट और टाइम नहीं डाला. नेक्स्ट, आप फर्स्ट पैराग्राफ देखो. फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या बोल रहे हो कि उन्होंने हमको इन्वाइट किया, हम वहां पे गए. नेक्स्ट, और वहां पे क्या क्या है, राइट? Then क्या क्या facilities हैं, and finally you are concluding. See how they are concluding this. That Mahatma Gandhi Animal Care Home is doing a mind-blowing job by understanding and fulfilling the needs of those who can't speak for themselves. The experience was an overwhelming one. So this is the conclusion paragraph. Clear? So how do you write a report? You mention the heading of the report, you mention the name, date and place, followed by the introduction कि हम वहां गए थे, कहां गए थे, वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं, अच्छे बुरे वगैरह. एंड फाइनली यू गिव अ कंक्लूजन कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग दैट प्लेस. अंडरस्टूड? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. समथिंग कॉल्ड एज लीफलेट राइटिंग. लीफलेट, पैम्पलेट, ब्रोचर राइटिंग भी इंग्लिश में कंसिडर किए जाते हैं. 12th स्टैंडर्ड में लीफलेट इज लाइक समथिंग यू गेट ना. आपने देखा होगा, आप किसी मॉल में गए हो तो यू कैन फाइंड सो मेनी लीफलेट्स देयर, पैम्पलेट्स है, ब्रोचर है. तो उसका एक ये आया नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. लीफलेट राइटिंग नहीं है. अगेन ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लीफलेट राइटिंग नहीं है. 12th स्टैंडर्ड तक है, उसके बाद ये नहीं है. लीफलेट, पैम्पलेट राइटिंग इज नॉट देयर. यस, एडवर्टाइजमेंट, करेक्ट रोहिणी, दिस इज एडवर्टाइजमेंट. सो इंट्रोडक्शन, टाइटल से शुरू होता है इंट्रोडक्शन. कहां है, क्या है, कैसा है. अभी सपोज अगर आपको अजंता केव्स को एडवर्टाइज करना है, अगर आपको महाबलेश्वर को एक लीफलेट फॉर्म में एडवर्टाइज करना है,
अगर आपको औरंगाबाद केव्स को एक एडवर्टाइजमेंट देना है तो कैसे दोगे? उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कैसे जाते हैं वहां पे, कहां रहना चाहिए और क्या क्या देखना चाहिए, फॉलोड बाय उस प्लेस के बारे में कुछ स्पेशल है, कब जाना चाहिए और उसका कंक्लूजन. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द लीफलेट ऑफ दिस, महाबलेश्वर द पैराडाइज ऑन द अर्थ. तो महाबलेश्वर का लीफलेट, टूरिस्ट लीफलेट कहते हैं इसको. ओके, एडवर्टाइजमेंट टूरिस्ट लीफलेट. महाबलेश्वर क्या है, नेक्स्ट कहां है, महाबलेश्वर कैसे जाते हैं, कहां रुकना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए. Clear? So basically it is a kind of tourist advertisement of Mahabaleshwar. It is a tourist leaflet. It's a tourist leaflet. Generally अगर एग्जाम में 12th में भी पूछता था तो tourist leaflets पूछे जाते थे. What is Mahabaleshwar? It is a paradise on earth. Where is Mahabaleshwar? How to reach there? कहां रुकना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, followed by the major important points. Anything special about the place? वहां फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, लाइक यू गेट स्ट्रॉबेरी, यू गेट हनी, यू गेट जैम्स, यू गेट चिकन, एवरीथिंग एल्स. एंड द लास्ट विल बी पिक्चर डिस्क्रिप्शन. ठीक है, चलो अब तक क्या लिया हमने? सबसे पहले शुरुआत की प्रेसी राइटिंग से, फॉलोड बाय रिपोर्ट राइटिंग, फॉलोड बाय ट्रांसलेशन और कॉम्प्रिहेंशन, फॉलोड बाय लीफलेट राइटिंग. ये 4 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए. मैम इन चारों में से एग्जाम में क्या आता है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईबी या नाबार्ड के रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है, ट्रांसलेशन या कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है, एंड फाइनली दे माइट आस्क समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू प्रेसी राइटिंग. ये 3 आएंगे. लीफलेट राइटिंग नहीं आता है. 4 डिस्क्रिप्टिव पार्ट्स लिए हमने. कौन से? रिपोर्ट राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन, लीफलेट एंड प्रेसी राइटिंग. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और ट्रांसलेशन. लीफलेट राइटिंग नहीं आएगा. जस्ट आई हैव टेकन दिस इन केस. क्लियर? चलो लेट्स गो विद द लास्ट पार्ट जो डिफेंस सर्विसेज में पूछा जाता है. यस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम में आता है. ये जीडी के फॉर्म में भी ले सकते हैं या रिटन फॉर्मेट में भी ले सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज पिक्चर डिस्क्रिप्शन. पिक्चर डिस्क्रिप्शन क्या करते हैं? स्क्रीन पे एक पिक्चर दे दिया जाता है. उस पिक्चर को देखने के बाद हाउ डू यू एनालाइज दैट पिक्चर, ये डिफेंस में लिया जाता है. दिस इज अ पार्ट ऑफ कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन. ना सी, दिस इज पिक्चर डिस्क्रिप्शन. या तो क्या करेंगे कि आपको ये पिक्चर दिखा देते हैं स्क्रीन पे और बोलते हैं ना लेट्स गो फॉर अ जीडी ऑन दिस, ना डिस्कस. ग्रुप है 10-12 बच्चों का, कम ऑन डिस्कस. और व्हाट दे मे डू इज दे मे आस्क यू टू राइट समथिंग अबाउट दिस पिक्चर. क्या आपके मन में आता है? यू कैन लेट्स गो फॉर दिस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पिक्चर? व्हाटएवर इज योर कॉम्प्रिहेंशन दे वांट टू सी. वो देखना चाहते हैं कि एक पिक्चर को देखने के बाद तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन क्या है, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है. So can you please write some few sentences about it? What can you understand from this picture? What is your comprehension of this picture? Try. What's your comprehension of this picture? Try. क्या दिख रहा है पिक्चर को, कैसे एनालाइज करोगे, कैसे कॉम्प्रीहेंड करोगे? ये डिफेंस सर्विसेज का क्वेश्चन है. इसमें भी पहले पूछा जाता था. डिफेंस सर्विस का क्वेश्चन है ये. Try. I'm just saying you to try. What can you see in the picture? How can you analyze the picture? I want answers in the comment section. Try. गलत तो गलत. सीखोगे कैसे जब गलती नहीं करोगे? तो इंसान गलतियों से तो सीखता है. Come on, I'm sitting here right next to your screen. Come on, be quick. What do you understand from the picture? How do you comprehend the picture? Where is Harshal, Rohini, Anand, Shinde, Yogita, Sneha, Sunita, Prasad, Vaibhav? Okay, Harshal. From the picture, I think there is investigating officer sitting on the chair and asking his officers about the details of the case. Okay, so Harshal feels that it is an investigating officer and interacting with his employees. But Harshal, if you can just see, there's a stick. Okay, तो आपने इसको अच्छे से देखो. There's a stick, right? There's this kind of a cap. These are open books. These are not papers. If you can see this, these are open books. And these two guys are in the same uniform. So can it be a teacher and student interaction, Harshal? The teacher or the boss is having a conversation with either of his employees or his students. You can see? Because these are books. If you can see, these are books. There's a stick here. There's a cap.
a person with a frame sitting in front of two students who are standing in a complete, very formal attire, right? So that can be an oral exam being conducted in a school. Yes, Ankit. Dekho, it shows your perception, right? It shows your perception. It shows your perception. Clear? So let's go for another picture description. Now see, can you, what can you go? ये दो अलग-अलग pictures थे. आपने एक कर दिया वैभव. ये दो अलग-अलग pictures थे. आपने इसको एक कर दिया. Okay, this is another picture. Yes. नहीं नहीं यही देखना था. Now this is another picture. What can you guess from this picture? What can you guess? Tell me. A person looking inside the mirror, and what can you guess from this picture? So this is used for defense services, wherein they may ask you to go for a group discussion, or they may also ask you to go for a written exam on this. Ma'am, oral exam nahi hoga because in that book open nahi rakh sakte right in front of the students. Okay, that's so correct, Prasad. This is how minutely you observe things. This also shows your observation for a particular situation, Prasad. This also shows your observation for a particular situation. Come on, let's go ahead with the next picture. How do you describe this? How do you describe this picture? Try. How do you describe this picture? Okay, Anand says that a person is thinking about his appearance in the mirror. Okay, Anand, come on, try. Rohini. In this picture, one man is standing in front of the mirror and it's happy to see him in this mirror. Okay, Akanksha has something to say. Ma'am, looking inside mirror and observing oneself. Okay, beyond that what? Beyond that what? This is something which is apparent. एक आदमी आईने में देख रहा है, this is apparent. Beyond that what? Okay, a man is ready to go to a party and he's seeing himself in the mirror. Okay. What else? Man is practicing some sort of speech. A person is dressing up in front of the mirror. What else? इसको आपको elaborate करना है. कम से कम 15 lines इस पे लिखने होते हैं. आप एक sentence छोड़ के नहीं लिख सकते. बस आपने एक बात लिख दिया and then you can just proceed. No. You have to go into the depth of comprehending this picture. Next. ठीक है? So that's it, students. Any doubts, please ask. Come on, I give you 5 minutes for your doubts. Please ask your doubts. Students who are live for this session, please go ahead with your doubts if you have anything with respect to descriptive writing session part 2. Any doubts, please ask. I'm waiting for your doubts. So what you have taken today? Report writing, précis writing, leaflet writing, translation or comprehension and picture description. कितने वर्ड का होना चाहिए मैम पिक्चर डिस्क्रिप्शन? रोहिणी, जनरली एटलीस्ट 10 to 15 लाइंस और इसको आप बोल सकते हो 50 to 60 वर्ड्स, मोर देन सफिशिएंट. ओके, सो अंकित हैज गॉट नो डाउट. इज दैट सो? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में जो अब आने वाले एग्जाम्स हैं, ठीक है? यस, दिस वाज द लास्ट लेक्चर, बट एनीवेज लेट मी गो अहेड विद दिस. I'll be putting this PPT for your Telegram channel, okay, on your Telegram channel. Now listen, descriptive writing कौन से मेंस में है? RRB PO मेंस में descriptive नहीं है, RRB क्लर्क मेंस में descriptive नहीं है, IBPS क्लर्क मेंस में descriptive नहीं है. 5 जो मेंस है उसमें से 3 में descriptive writing नहीं है. अभी February तक जो एग्जाम्स हैं उसमें 2 में descriptive writing है. First is IBPS PO मेंस and SBI PO मेंस. तो ये जो 2 एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, लेट मी क्लियर दिस. उसमें क्या पूछा जाता है? एसे एंड लेटर राइटिंग. सो एसे एंड लेटर राइटिंग की तैयारी कितने दिन में होती है मैम? लेटर राइटिंग की तैयारी 5 दिन, एसे राइटिंग को 10 दिन. टाइपिंग की प्रैक्टिस करो बिकॉज यू नीड टू हैव द स्पीड फॉर दैट. फर्स्ट. सेकेंड, लेटर हमेशा पहले लिखना है, फॉर्मल लेटर लिखना है. सेकेंड, बाद में एसे लिखना है. ऐसे को लिखते समय 3 चीजों की बात अच्छे से ध्यान में रखना है. स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए और आपके रेलेवेंट वर्ड्स का वहां पे यूज होना चाहिए. अंडरस्टूड दिस? ओके मैम, लेटर का फॉर्मेट एग्जांपल लास्ट में बताना. स्नेहा, दिस आई हैव टेकन यस्टरडे इटसेल्फ. ओके स्नेहा, ये हो चुका है कल के लेक्चर में. ओके, यू कैन डू दिस एज अ वीकली टास्क ऑल्सो.
बट मेरे हिसाब से जिन बच्चों की प्री निकल गई है, दे शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। जिन बच्चों की प्री निकल गई है, दे शुड स्टार्ट विद डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। स्टूडेंट्स जिनकी प्री ही नहीं निकली, डिस्क्रिप्टिव के बारे में सोचना बेवकूफी है। क्लियर? क्योंकि मैम आपने तो बोला एसे के लिए रीडिंग करना है, वैसे भी तो आप इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए रीडिंग कर रहे हो, तो स्पेसिफिकली एसे को नजर रखते हुए मत करें, ठीक है? जिन बच्चों की प्री निकली है, दे शुड नाउ फोकस ऑन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ इट। ओके, सो ओके, हर्षल का एक डाउट है, सराउंडिंग्स को भी मेंशन करना चाहिए। आई एम नॉट क्लियर विथ योर डाउट हर्षल, एनीवेज यू कैन कम अगेन in the better simpler language. Let's come up Swati, the person looking himself. Okay, Prasad, also in picture description we can describe what things or objects can be identified in the image. Okay, see हर्षल का बोलना है कि मैम जब अपन डिस्क्रिप्टिव ये में पिक्चर डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, तो पिक्चर डिस्क्रिप्शन का ना बेटा फिजिकल एस्पेक्ट आपको पूरा देना होता है। फिजिकल एस्पेक्ट यानी पिक्चर में आपको एपरेंटली क्या क्या दिख रहा है, ऑब्वियसली क्या क्या दिख रहा है। आदमी है, मिरर के सामने खड़ा है, वहां पे ड्रेसिंग टेबल पे कुछ सामान रखा है, ही इज वेयरिंग अ फॉर्मल अटायर, ही इज वेयरिंग शूज। ये आपका 15, 20, 25 वर्ड्स में क्लियर हो जाना चाहिए, द एपरेंट थिंग्स दैट कैन बी सीन इन द पिक्चर। but then you have to have your own opinion, your own perspective about the picture will come in the later part of the picture description. ठीक है? क्या दिख रहा है, इसके अलावा क्या हो सकता है, ये भी आपको सोचना है। हो सकता है कोई आदमी एक स्पीच की तैयारी कर रहा है, हो सकता है कोई आदमी अपने आप को बहुत पॉजिटिवली या हाई समझता है, उसके बारे में वो मिरर में देख रहा है। somebody is getting ready for a party mood, you can go with all these things. Okay, surely I can do that Prasad, but again picture description is as personal as your toothbrush. Why? Because मेरे हिसाब से वो आदमी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मिरर में पॉजिटिव बोल रहा है। किसी ने कहा मैम वो आदमी अपने आप को मोटिवेट कर नहीं कर रहा है, वो अपने आप को पार्टी के लिए तैयार कर रहा है। सो पिक्चर डिस्क्रिप्शन इज लाइक योर थिंकिंग प्रोसेस, इट इज एज पर्सनल एज योर टूथब्रश। आई विल गिव द एग्जाम्पल बट यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन इंस्टिंक्ट्स। क्लियर? चलो, so thank you so much students. We'll be in touch through Telegram channel. For any doubts, you can keep posting me on Telegram channel. Have a wonderful day ahead. Thank you. Yes, yeah.